Okay, so we will study surface areas and volumes formulae for cylinder, cone, and sphere. Can you give me an example of a cylindrical shape we discussed in the last class? So a cylinder can be a, a, a can of any soft drink. Very good. And which family is the cylinder belongs to? So We have learned in the previous class there is a prism family and then there is a pyramid family, right? Prism has two identical surfaces joined together by rectangular surfaces. And pyramid has one polygonal surface whose vertices are joined to an apex by triangular surfaces. what do you mean by apex? Apex is just a single point, the top of the pyramid. Apex is a point. Okay. In Hindi, it is known as choti, like the top of a mountain, right? Acha, okay. So if you go by this definition, we are saying one polygonal surface. So if I take a parallelogram as a base, which is a polygon, and take a vertex, take an apex at the top, and join this apex by each of the each of the vertex of the base, you will get something like this, right? And each surface that you get is what? Isn't it a triangle, right? We got four surfaces because there were four edges at the bottom. We got four triangles, right? And in a prism, if you take a parallelogram at the base and you take another parallelogram at the top and you join the corresponding edges by rectangular surfaces, you will get a prism. And this is a parallelogramic prism, right? Because the top and bottom are parallelograms. So cylinder also comes in the prism family because it has an identical top and an identical top and bottom, right? And I told Yeah. you that for a prism, the lateral surface area is perimeter of base into height. Therefore, the lateral surface area of a cylinder becomes, what is the perimeter here? Circle, 2 pi r. And if you assume the height of the cylinder is h, the formula becomes 2 pi r h, right? And then the TSA. TSA stands for total surface area. This is total. Total surface area finding out is very easy. You already have the CSA, which is the area of the curved surface of the cylinder. Add to it the top and add to it the bottom. CSA is 2 pi r h. And the top and bottom are identical. So we can multiply whatever the area of any of the two is by 2.
And what is the area of the top and bottom in this case for a cylinder? What kind of shape is this for a cylinder? सिलेंडर का टॉप कैसा है? Pointed. सिलेंडर का, नॉट पिरामिड Oh, का. sorry. Sorry, sir. Point. Identical. में मुंह से Identical point है, है. but what is that shape? Sir, circle. Circle. And circle का area का formula? Sir, 2 pi r. No, that is perimeter. Sir, अच्छा area. Okay, pi r. Pi r square. So the formula becomes, now you can see we can take 2 pi r common. What is remaining is h, and here what is remaining is r. So this becomes the formula for the total surface area of a cylinder. Sir, derivation. Yes. And this is lateral surface area. Next is volume. Volume of any prism. There is a standard formula. Area of the base times its height. Right? Area of the base times its height. Now, what is the area of the base for a cylinder? We just used it. Pi r square. And what is the height of the cylinder? H. So this becomes the formula for the volume. Right? Is this clear to everyone? Any doubts? No, sir. Great. Now, let's move to the next shape, which is a cone. Cone is obtained by joining the edge of the circle with an apex at the top. Right? Join this apex with every possible point on the circle's circumference, and you will get a conical shape. And since it fits the definition of a pyramid, cone belongs to the pyramid family. Cone belongs to the pyramid family. And for the pyramid, volume of a pyramid is given by 1 by 3 area of the base times height. 1 by 3 area of the base times height, and the volume of a prism was just area of the base times height. So only difference is the addition of 1/3. 1 by 3 से multiply करना है बस. So if this is radius, this is height, can you tell me what will be the volume formula of a cone? Let volume formula of Use this formula. You don't need to remember anything. You already know what is the area of the base. You already know what is the height. Multiply that by 1 by 3. 1 by 3 times. What will be the area of the base? 2 pi. Say 2 No, L area of into the 2 base pi r. again. Area of the base. Why are you telling perimeter? Sir, pi r square. Okay, pi r. Sir, मैं बहुत confused हो जाता हूँ. Sorry. Pi r Yeah. square, and the height is h. So volume formula is 1 by 3 pi r square h. At H. Okay, sir. Okay. And in cone, there is one special thing, which is this length.
So that is tilt surface area, tilt length, That is known as slant height. slant height. That is known as slant height. Why it is called slant height? Because it is not So a because vertical. it is tilted. It is tilted. It's not the vertical height. And you will also notice that this cone, in this cone, this angle is a 90-degree angle. Right? The height and radius are perpendicular to each other, and that is why this particular cone is also known as right circular cone. It is known as right circular cone. We can also have a cone like this. Take a circle, take an apex here, and then join it like this. In this case, you will not get a 90-degree angle. This is not a right circular cone, but it is still a cone. It is a tilted cone. ठीक है? It is a tilted cone. Now, can you observe in this right angled triangle, we know three sides, H, R, and L. Can we not have a relationship between these three by Pythagoras theorem? By Pythagoras theorem, we can see L is the hypotenuse. So L square should be equal to H square plus R square. Or the slant height is equals to square root of H square plus R square. So you should learn this formula as well. Because in some questions, you might be given any of the two things and you will be required to know the third side in order to do questions. Okay, sir. Okay. So we know the volume formula, we know the slant height formula. Let's come to the curved surface area formula, CSA formula. CSA of the cone is pi RL. There is no special formula for a CSA of a pyramid. So you should, as it is, learn this formula. Pi times R times L for CSA. This you should learn. Rest all formula you can deduce. Right now, if you know the CSA, TSA becomes very easy. TSA is total. And what Yes, extra? sir. So, What extra we will add some earth? Yes. To so we CSA. will add the slant height and No, slant height by curved surface area is already there, which is pi RL. Which yeah, face do okay. we need to add? So CSA plus circle, I guess. Circle, yes, which is the Area of circle. base. Yes, area of the circle. Very good. So pi So it will RL become pi RL plus, plus pi R squared equals to pi R bracket में L plus R. very good. Yes, pi R bracket L plus R. And that is the formula for TSA of a cone. Okay, sir. Pi R times L plus R. So this formula will be used when you are required to find out the total area. Where will Okay, CSA sir. be used? Let's say you are making a birthday cap. So cap is open from the bottom, right? No cardboard will be required to, you know, make this side because this is open. So in that case, you will only find the total surface, the curved surface area, Okay, right? sir. And when the cap is closed, then you will find the total surface area. And volume is volume. Okay. Now the next surface is, any questions so far? No, sir. No.
Okay, so next shape is sphere. Sphere is very easy to define. A sphere is just a round object, circular three-dimensional Round. object, It's like a round ball. round ball, yeah, Or a football. football, earth. रिमेम्बर फिजिक्स में अर्थ की वॉल्यूम निकाली थी, उसको स्फीयर ही तो माना होगा, राइट? और स्फीयर अर्थ Yes, की sir. वॉल्यूम कैसे निकाली होगी? जब तक स्फीयर का फॉर्मूला नहीं पता चलेगा, यू वोंट बी एबल टू कैलकुलेट अर्थ्स वॉल्यूम. Yes, But sir. Earth is not a sphere. Earth is not a sphere, isn't it? Sir, Why? Earth is not a perfect sphere. Yeah, Yeah, मतलब. there's a big dent like on the north side. सर As well. फिजिक्स की नोटबुक में लिखा था कि दैट्स वाई पोल्स पे अट्रैक्शन और ग्रेविटेशन कम होता है, नहीं, उ- ये लिखा था कि इक्वेटर और पोल में डिफर करता है, मैं ये भूल गया किसमें कम था किसमें ज्यादा Yeah, था. yeah. हाँ, There it was might be a, least at the yeah, poles, it was least at the equator and maximum at the poles. yeah. So it's not a perfect sphere, but you will place it in the category of a sphere because the closest it can get is a sphere, right? You Yes, are right. sir. So we will learn three formulas for curved surface, total surface, and volume. Now, can you tell me, will there be any difference in a curved surface area or the total surface area of a sphere? नो सर, क्योंकि कुछ है ही नहीं, मतलब. कुछ है ही नहीं. Everything is curved. यस सर. There is no base, there is no top, right? यस सर. So this is a good news for us. We don't need to remember two formulas. There is only one formula, and that is given by 4 by 3 pi r cube, where r is the radius of the sphere. Pi r cube times 4/3, 4 by 3. And volume is, I think I made a mistake. The volume is 4 by 3 pi r cube. The CSA is not that. CSA is, just remove the two threes. Remove the 3 from the bottom, remove the 3 from the top, and put a 2 instead. 4 pi r square is the CSA and the TSA, and the volume is 4 by 3 pi r cube. If you cut the sphere from the center diameter into two equal parts, what shape you get? सर हेमिस्फीयर. Hemisphere. And you must have heard this word in geography: northern hemisphere, southern hemisphere, यस सर. right? Now, once you have divided it into two equal parts, two semicircular three-dimensional objects, which we call a hemisphere, now the CSA and TSA will be different. Because as soon as you have cut it, there is an additional surface which gets created here, which is a circular two-dimensional circle, right? This is a circular surface. If you look at it from the top, can you visualize कैसा दिखेगा ये? If you can you give some example of a hemisphere, real life object? Sir, it can be a bowl. Yes, it can be a bowl. What about the ice cream scoop on the softy cone? Yes, sir. Right, this is a cone, and this could be a hemisphere. The ice cream scoop half, right? So if sphere's total surface area is 4 by r square, or its curved surface area is 4 by r square, what will be the curved surface area of a half of a sphere? Just divide it by 2, 2 pi r square.
So CSA is 2 pi r square, the curved portion, only this circular curved portion, that is 2 pi r square. And for TSA, what do? We will add to it the area of The top. the top circle. And what is the area of a circle? So pi r square. Pi r square. So we get 2 pi r square plus pi r square, which becomes 3 pi r square. सर हम उसको कॉमन नहीं लेंगे पाई आर स्क्वायर को. कॉमन लिया तो बचेगा क्या? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, इधर 2 बचेगा और इधर 1 बचेगा. 2 + 1 इज अच्छा 3. 3. ओके सर. या फिर ऐसे समझ लो 2x + x. 2x + x is 3x. यस सर. That is why मेरे 3 को pi. नहीं समझ आया है हेमिस्फेयर. हेमिस्फीयर का क्या नहीं समझ आया? होता क्या है? जनरल में यस सर. ओह, अगर आप लाइक एक इट्स फुटबॉल लो. हाफ ऑफ अ स्क्वायर राइट. हाँ, फुटबॉल लो, उसको बीच में से ऐसे कट कर दो, तो तो बॉल के 2 टुकड़े नहीं हो जाएंगे? सर फॉर्मूला लगाने की क्या जरूरत है, डिवाइड बाय 2 कर दो. वही तो किया है, सीएसए में तो डिवाइड बाई 2 ही किया है. 4 पाई आर स्क्वायर था, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 पाई आर स्क्वायर आ गया. तो पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में 2 + 1 कैसे आया? क्योंकि वो टीएसए है, क्योंकि एज सुन एज यू हैव कट इट, एक नया सरफेस नहीं क्रिएट हो गया. जहां से काटोगे ये, हाँ. वो एक सर्कुलर नहीं दिखेगा? जैसे एक कटोरी होती है, एक बाउल होता है, बाउल के ऊपर क्या होता है? एक सर्कल, हम्म. राइट, जहां से यू एंटर फूड इनटू इट. अगर वो उसके ऊपर एक ढक्कन बंद कर दो, तो वो भी तो एक सरफेस नया क्रिएट हो गया, कटोरी का टॉप. यस. उसका भी तो एरिया ऐड करोगे, अगर क्लोज्ड बाउल है तो. यस. राइट, तो उसका एरिया क्या होगा? वो तो एक सर्कल ही है ऑफ रेडियस आर, तो उसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. तो ओके. 2 पाई आर स्क्वायर जो कर्व्ड सरफेस एरिया था, जो सिर्फ इतना इतना एरिया था, ये वाला कर्व्ड पोर्शन का एरिया था, उसमें बेस का या टॉप का एरिया भी ऐड कर दिया, तो यू गेट 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, विच इज 3 पाई आर स्क्वायर. सो द सर वन कर्व्ड. मोर क्वेश्चन. हम्म. सर यू कैन कंटिन्यू यस फर्स्ट. यस, बोलो बोलो. सर मैं बोल रहा था, जो आपने 4 पाई आर स्क्वायर है हम्म. उसको 2 से डिवाइड किया तो सर वो 2 पाई आर स्क्वायर बन गया राइट? हाँ, यस करेक्ट. सर सर 2 इंटू सॉरी 4 इंटू 3.14 इंटू पाई आर नहीं होना, इंटू आर स्क्वायर नहीं होना चाहिए अपॉन 2. अपॉन 2. हाँ, वही तो या करा है. तो हमने हमने 4 से किया, पाई वैल्यू की भी तो वैल्यू नहीं काटनी डाली है. ना, 2 से 4 काट दिया. ओके, आई राइट, गेट इट 4 सर. 4 का ही आधा कर दिया, पाई एज इट इज रहा. ओके सर. राइट, गुड. कीप आस्किंग क्वेश्चंस. वॉल्यूम. अब वॉल्यूम में सम अर्थ वी कैन अप्लाई योर फंडा अगेन. पूरे स्फीयर की वॉल्यूम इतनी है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो आधे स्फीयर की कितनी होगी? सर 4/3 So 1 पाई by आर 2 की. of 4/3 pi r cube. यस. या. एंड हियर we can simplify these fractions. 2/3 पाई आर क्यूब बन गया फॉर्मूला. वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 2/3 पाई आर क्यूब हो गया. क्लियर? Yes sir. ओके, गुड. सो ये फॉर्मूले, कुछ फॉर्मूले तो कितने इजी हैं, वी कैन ऑलवेज फाइंड आउट दैट फॉर्मूले इफ वी आर इवन स्टक. अगर हम मान लो 2 साल के बाद ये फॉर्मूले भूल भी जाएं, तो कुछ बेसिक कॉमन सेंस से हम फॉर्मूले निकाल सकते हैं. राइट, एटलीस्ट टीएसए तो निकाल ही सकते हैं, वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं. स्फीयर की पता है तो उसकी आधी हो जाती है. स्फीयर का टीएसए और हेमिस्फीयर का टीएसए भी आधा हो जाता है. सीएसए सॉरी, टीएसए में ऊपर का ऐड कर दो, जो एक्स्ट्रा सरफेस क्रिएट हो जाता है. So we have covered all the formulas. Let me know if you have any questions. No sir. सर
These formulas I have also uploaded them on the drive. They are all listed here. CSA 2 pi r h, TSA 2 pi r into h plus r, volume pi r square h, right circular cone pi r l is CSA, TSA is pi r into l plus r. This is from Pythagoras theorem. Volume is 1/3 into area of base into height because it is a pyramid. Okay, sir. Right? स्फीयर का TSA CSA बराबर है 4 pi r square 4 by 3 pi r cube. हेमीस्फीयर का CSA इसका आधा हो गया 2 आ गया. TSA में एक्स्ट्रा pi r square ऐड हो गया. वॉल्यूम इसकी आधी हो गई. Sir, L is the slant height. Small l is the slant height. अच्छा तो पाई आर एल Is the CSA of a cone. ये लर्न करना है आपको. इसका कोई डेरिवेशन नहीं पढ़ा है हमने. अच्छा ओके सर. Okay. And these formulas we have discussed in the previous class. LSA of a cuboid, TSA volume of a cuboid, LSA of a cube 4a square, TSA of a cube 6a square, volume is a cube. How many shapes? Total 6 shapes, 3 formulae for each, so 18 new formulas plus an extra formula for slant height. Okay sir. Okay. Now we have talked about areas and volumes. Let's quickly discuss about the units and unit conversions. How do we do? What unit will you measure area in? So centimeter square. Yes. Any other unit? Bigger unit? So meter square. Meter square. Kilometer square. Kilometer square. Now, how do we know how many centimeter square will be there in a meter square? So 100. No, 100 square. 100 square. Very good, Samarth. Because 1 meter Exactly. is 100 centimeter, that we already know. If we square both sides, 1 मीटर इंटू 1 मीटर हो जाएगा. और ऐसे ही राइट में क्या होगा? 100 सेंटीमीटर टाइम्स 100 सेंटीमीटर. तो लेफ्ट में तो 1 इंटू 1 1 ही रहेगा. मीटर विल बिकम मीटर स्क्वायर एंड 100 इंटू 100 बन जाएगा 10,000. सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 1 मीटर स्क्वायर इज 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. 100 इंटू 100. Okay sir. तो अगर मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 10,000 से मल्टीप्लाई, अपोजिट करना है तो 10,000 से डिवाइड. ऐसे ही आप ये भी निकाल सकते हो, किलोमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर. सिमिलरली फॉर वॉल्यूम, दिस वाज अबाउट एरिया. फॉर वॉल्यूम वी हैव सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब. You might have seen that in certain bottles जिसमें कुछ लिक्विड आता है उसके ऊपर वॉल्यूम लिखी होती है इन क्यूबिक सेंटीमीटर. कहीं देखा है ये लिखा हुआ? Yes, sir. Tetra कहाँ देखा है? रियल का जूस या किसी पे लिखा होता है. किसमें? रियल के जूस में? जूस इज समथिंग आई गेस. हाँ, क्यूबिक सेंटीमीटर. क्यूबिक सेंटीमीटर इज सेम एज सेंटीमीटर क्यूब. दे आर सेम. क्यूबिक सेंटीमीटर का दूसरा नाम है सेंटीमीटर क्यूब. ऐसे ही मीटर क्यूब कैन आल्सो बी रिटन एज क्यूबिक मीटर. जैसे एरिया में होता था ना स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, ऐसे एरिया में होता था, ऐसे इसमें भी होता है. दिस इज सेम एज मीटर क्यूब. So how many centimeter cube will be there in 1 meter cube?
एक बार और 1 मीटर से मल्टीप्लाई कर दो, ओके सर। कितना बन जाएगा? 100 का क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब. So 1 meter cube will be 10 to the power 6 centimeter cube. Because 100 का क्यूब करोगे तो ये क्या बनेगा? Can you simplify it using laws of exponents? 100 can be written as 10 square whole cube, which is 10 to the power 6. So मीटर क्यूब को अगर सेंटीमीटर क्यूब में करना है तो 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, और अपोजिट करना है तो डिवाइड करना होगा. ठीक है, क्लियर? Now there is it clear? Can we move ahead or not clear? क्लियर सर। Okay, so now there is another quantity which is known as capacity. Capacity is same as volume. The space occupied by any object, the space occupied by any three-dimensional object is practically same as the amount of quantity it can hold. Right? जितना वो hold कर सकता है वो उसकी capacity है. Right? और जितनी जगह घेर रहा है वो, जितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है वो उसकी वॉल्यूम है. राइट? तो दोनों एक ही चीजें हैं बट डिफरेंट जगह डिफरेंट यूज करते हैं टू से. राइट? if we are talking about how much water it can hold, so we will talk about capacity. If we talk about how much space will it occupy, we will talk about volume. We will say volume. तो अल्टीमेटली निकालना हमें वॉल्यूम ही है दोनों केसेस में, बट जो कैपेसिटी होती है उसको हम लीटर्स में मेजर करते हैं. Right? If you want to tell someone ki how much water will it hold, how much air will it hold, you will tell that in liters. सर लीटर्स और मिलीलीटर्स। Liters or milliliter, yes. वो कन्वर्शन तो आपको पहले से ही पता है, राइट? 1 लीटर इज 1000 मिलीलीटर. 1000 मिलीलीटर। जैसे जैसे सेंटीमीटर और मिलीमीटर होता है वैसे ही है ये भी, एग्जैक्टली सेम. बट देयर शुड बी अ वे to tell how many liters is equal to how many centimeter cube or how many meter cube. सर बट उनकी तो लाइक वैल्यूज ही अलग अलग है, कोई लिंक ही नहीं है। लीटर इज हाँ, लाइक कोई लिंक नहीं है तो हमें लिंक लाइक स्टैब्लिश करना है. ओके सो सर। मैथमेटिशियंस ने ये बोल दिया कि कोई चीज अगर 1 लीटर है, so that is equal to 1000 centimeter cube. सो मतलब 1000 × 1000 × 1000। No, only 1000. अच्छा। अरे वो ब्रैकेट नहीं है ना, अगर ब्रैकेट होता तो लीटर 1000 टू वॉल्यूम का 1000। यूनिट है, सेंटीमीटर लीटर कैपेसिटी का यूनिट है, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट है. दे आर इक्विवेलेंट. लीटर का क्यूब नहीं करना है हमें, लीटर खुद ही एक तरीके से वॉल्यूम. ओके सर। सिंगल नंबर विच रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम, नो नीड टू डू क्यूब ऑफ इट. राइट? तो बेसिकली ये आइडिया क्या है? बेसिकली ये है कि अगर आप एक क्यूब ले लो जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, एक क्यूब ले लो जिसकी लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों 10 10 है, तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी? 10 × 10 × 10 1000 सेंटीमीटर क्यूब. और जितना पानी ये होल्ड करेगा एग्जैक्टली ये 1 लीटर पानी होल्ड कर लेगा, या 1 लीटर एयर होल्ड कर लेगा, ये बोल रहे हैं. ठीक है? एंड 1 किलोलीटर इज इक्वल्स टू 1000 लीटर. ये तो हमें पता ही है, किलो का मतलब 1000 होता है. एंड दैट विल बी इक्वल टू, एंड 1 लीटर इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब,
So 10 raised to the power 6 centimeter cube. Because 1 liter is 1000. So 1 kiloliter is 10 raised to the power 6 centimeter cube. And 10 raised to the power 6 centimeter cube is 1 meter cube. So ideally, essentially, 1 kiloliter is 1 meter cube.